तुझे पता है इसका मतलब? हाँ, देखेंगे। तो विद्या से विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता और योग्यता से धन प्राप्त होती है और धन से धर्म होता है जिससे सुख की प्राप्ति होती है। देखा तूने स्कूल को जाने के बाद क्या क्या सीखने मिलता है। तो इसी तरह विद्या का महत्व समझाने हमारे संस्कृत के छात्र एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो चलो उनका नाटक देखेंगे। So let's begin with Sanskrit drama. Pujyate. It means knowledgeable person will be respected everywhere. Being knowledgeable and wise takes a person to bear maximum in life. So being educated is the most important concept and the society respects such educated people. But some students take education very lightly. Now, let's see the children how they talk to the inspector. The education inspector is a strict personality, but the kids don't consider that. Now let us see how they talk to the inspector, giving him their attitude and answer everything as a joke. ಸ್ವಗೃಹೇ ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತನು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆದರ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ವಿಷಯಾಧಿಕಾರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯಾಧಿಕಾರಿಯು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾದ ಮನುಷ್ಯ, ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ನೋಡದೆ ಹುಡುಗಾಟವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಭೋದಯ. ಉಪವೇಶನ ಸರ್ವೆ. सर्वे सम्यक् अध्येतव्यम् इति मया उक्तं. सर्वे अध्ययनं कृतवन्तः किम्? सर्वे अध्ययनं कृतवन्तः. केवला बालिकाभिः उत्तरं दीयते, बालकैः न दीयते. परश्वः मया उक्तं किल, इदानीम् अधिकारिणः आगमिष्यन्ति. किमर्थम् ऊष्माभिः न पठितम्? अस्माभिः पठितं महोदय. पठितं वा अद्य अधिकारिणः आगमिष्यन्ति. तेषां प्रश्नानाम् उत्तरं दातव्यं, नो चेत् तस्य सूर्यतापे धास्यामि. महोदय चिन्ता मास्तु, ते किमपि पृच्छन्ति, तेषाम् उत्तरं दास्यामः, चिन्ता मास्तु. मया ज्ञातं यूयू कथमिति, अतः उत्तमं सम्यक् उत्तरं ददातु. इदानीम् अधिकारिणः आगमिष्यन्ति, तेषाम् उत्तरं दातव्यं. महोदय चिन्ता मास्तु. शुभोदय महोदय. आगच्छन्तु. उपविशन्तु सर्वे. छात्राः सम्यक् पठितवन्तः किम्? सम्यक् पठितवन्तः. तान् केनापि विषये प्रश्नं पृच्छन्तु, छात्राः उत्तरं दीयन्ते. भवतु, तेषाम् अहं पृच्छामि. भवान् क्षणमात्रः बहिर्गन्तव्यः. भवतु महोदय. सर्वेपि नाम वदत. मम नाम मञ्जुनाथ. मम नाम सुरेशः. मम नाम रमेशः. मम नाम खुशी. मम नाम रश्मि. मम नाम प्रीति. भवतु, इदानीं बालकान् प्रति प्रश्नं पृच्छामि. प्रथमप्रश्नः, सूर्यः भूमेः सकाशात् कियत् दूरः अस्ति? महोदय मम गृहे तृतीयगृहं त्यक्त्वा चतुर्थगृहे अस्ति. रे कोऽयं सूर्यः? एषः मम सखा. रे तादृशसूर्यः न, यः प्रभां ददाति किल इति सूर्यः. त्वं वद. अपृच्छतु. प्रथमपाणिपत्कदनं कदा अभूत्? प्रथमपाणिपतनं प्रातः अभूत्. रे मया पृष्टः प्रथमपाणिपत्कदनं कस्मिन् वर्षे अभूत्?
महोदय वर्षा न ज्ञाता अतः मया उत्तमम्। तुभ्यं वक्तुं न शक्यते, तव शिक्षकाय वक्तव्यं। रे रमेश, त्वं वद, लिङ्गेषु कति प्रकाराः सन्ति? षड्विधा महोदय। तान् वद। स्त्रीलिङ्गः, पुल्लिङ्गः, नपुंसकलिङ्गः, सिद्धलिङ्गः, शिवलिङ्गः, श्रीलङ्काया क्रिकेट् खेलति खिलाः लसितलिङ्गः। वः उत्तरः शृण्वते चेत् मम शिरोवेदना भवति। खुशी, त्वं वद, पर्वतम् आरोहयितुं किमर्थं शक्या? ग्लूकोस् महोदय। तत् कथं? मया दूरदर्शने दृष्टम्। एकः प्रथम प्रासादात् तृतीयप्रासादात् पर्यन्तं बालकीं नयति स्म। यदा ग्लूकोस् पीयते किल तदा शक्तिः भवति। रे रश्मि, त्वं वद, एकचषक क्षीर पीतं चेत् किं प्रयोजनम्? एकचषकेन क्षीरं पीतं चेत् काफी तस्य पातुं क्षीरं न भवेत्। रे, मया पृष्टः एकचषक क्षीरपानेन शरीराय किं प्रयोजनम्? मम पिता न दीयते, किमर्थं चेत् गृहे क्षीरस्य अलभ्यमानत्वात्। उपविशन्तु। प्रीति, त्वं वद, भसता श्व किमर्थं न दशति? एककाले द्वौ कार्यं कर्तुं न शक्यते महोदय। सर्वेपि नमनम्। At home and talk with her in a notorious way. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿಷಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈದು ಹೋದರು. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದೆ ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. माता शालां गत्वा आगमिष्यावः। भ्राता गच्छ समयः भवति शालां गच्छावः। अये मम पुत्रौ शालां गच्छन्तौ, तौ कलेक्टर् भवतः। नहीं अहं कलेक्टर् भवितुं नेच्छामि। रे मञ्जा, तव चारित्रं मम अज्ञातं वा? सम्यक् पाठं पठित्वा विद्यावान् भव। तव सहोदरः कथं पठति? माता मम विद्या न गच्छतु, किमर्थं शालां प्रति प्रेषयसि? प्रपञ्चे किमपि सम्पादनं कर्तुं शक्यते, परन्तु विद्यां न। भवतु शालां गमिष्यावः। शीघ्रम् आगच्छन्तु। रे मम पुस्तकं न मम पुस्तकं। रे मम। आरोदलक्ष्मी, गुरु पुस्तकं ददातु। तत् तस्या पुस्तकं। त्वं तस्यां सहायं करोषि। स्त्रिया समाजे उन्नतिं प्राप्तव्यम् इति आशा भवतु। इदानीं तां शालां नयतु। ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು इति योगराजपटे उत्तरं किल? अय्यो तत् चलनचित्रे अस्ति। इदानीं सम्यक् पठ। एवं कुर्वन्ति वा? रे भ्राता माता गृहकृतः। भ्राता किं कुर्वः? उपायः अस्ति चेत् तदा न निदान पुस्तकानि। यु आर् शालाम् आगमिष्यत। पश्यामि। शिक्षकायाम् आगतवन्तः। पश्य पश्य। अय्यो शुभोदय शिक्षिका। शुभोदय सर्वे। इदानीं हाजराति स्वीकरोमि। रोशनी, हरि ओम्। अक्षज, हरि ओम्। लक्ष्मी, हरि ओम्। शरद, हरि ओम्। मंजुनाथा, यः आगतः अद्यापि आगतोऽस्मि। श्वः। हा संशय महोदय। रे उपविश। शंकर, भवतः नयनसमीपे अस्मि। रे उपविश। जगन,
यदा कदापि आगच्छतु स भवतु। इदानीं प्रश्नं पृच्छामि। महोदय संस्कृत कोट्याधिपति विषय किं महोदय? रे त्वमेव कोति उपविश। सः कोट्याधिपतिनः कोट्याधिपति। इदानीं पृच्छामि, कन्नम्बाडी आनेकट्टु केन निर्मितं? महोदय श्रीवत्स त्वं वद। महोदय काण्ट्राक्टेन निर्मितं वा? किं काण्ट्राक्टरा? रे उपविश। शरत् त्वं वद। महोदय सर एम विश्वेश्वरय्य। सत्यमुक्तं त्वया, उपविश। श्रीरामः वनं गतः। इदानीं पृच्छामि, मञ्जुनाथ त्वं वद। वयं प्रवासः ट्रिप् गमिष्यामः किल, तथा श्रीरामः सीतया सह पिक्निक् गतवान् इति मन्ये। किं श्रीरामः सीतया सह वनाय पिक्निक् गतवान्? रे उपविश। शङ्कर त्वं वद। महोदय पितृपाक्य परिपालनाय वनं गतः। सत्यमुक्तं त्वया, उपविश। धन्यवादः। रे श्रीवत्स मञ्जुनाथ पश्यतु सहोदर्यां दृष्ट्वा। जन्मदिनात् प्रारभ्य तान् पश्यन्नेव अस्मि, तथा एतादृश अवस्था गतिः। रे उपविश। अस्माकं देशस्य प्रधानमन्त्री कः? सचिन तेंडुलकर वा? न धोनी। न दर्शक। तिष्ठतु श्रुत्वा वदामि। रोशनी त्वं वद। नरेंद्र मोदी महोदय। सत्यमुक्तं त्वया, उपविश। धन्यवादः। रे सर्वे पश्यतु, लघ्वी अपि ज्ञातवती। स्त्रियाः कियत् पठनेन किं, तासां पात्रशुद्धीकरणमेव गतिः। रे श्रीवत्स तव कल्पना तथा न, परन्तु सा विद्यावती चेत् समाजे बहुज्ञानी। स्त्रियाः पठनेन प्रयोजनं किं महोदय? सर्वे पुरुषेण क्रियते। स्त्रियाः देशस्य नयनम्। अस्मदेशीयाः सुधामूर्ति, निर्मला सीतारामन्, भो सर्वे पश्यतु, अस्मशालायाः अध्यक्षाः उज्ज्वला मण्डगी महोदया, द्वे प्रांशुपाले, तथा सर्वे शिक्षिकाः, एते सर्वे स्त्रियाः किल। पुरुषाः केवलकार्यं कुर्वन्ति, परन्तु वयं स्त्रियाः गृहकार्येण सह सर्वे कार्यं कुर्वामः। ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. The teacher just explained the students about the importance of women in our society. We have seen throughout the years how women are proving their presence in the development of their respective field. Some examples are Smriti Mandana, Mithali Raj, Sudhamurthy, and some of the examples are visible to us this evening. Be it our Honorable Chairperson, Srimati Ujjwala Mandgi Ma'am, or be it our beloved principals and our beloved teachers. महोदय कथं कस्यचित् विद्यार्थे ब्रेन् ट्यूमर् आगतः। कथम् अभूत्? गयं मोबैल् सतत उपयोगेन एवम् अभूत्। पश्यतु छात्राः, मोबैल् उपयोगेन कियत् दुष्परिणामः भवति। अस्मत् गृहे सदा मोबैल् उपयोगः कुर्मः, तथापि किमपि दुष्परिणामः? अज्ञातमपि दुष्परिणामः भवति शरत्। तेन ज्ञापकशक्तिः क्षीणा भवति। गुरुवर्यः, अहं प्रतिदिनं फ्री फायर् खेलामि। अतः तव अङ्कानि शून्यानि। मोबैल् त्यक्त्वा अध्ययनं कुरु। महोदय, अहं कः पठितः? यः पठितः किं करोति? सः कार्यं न कुर्वे न भ्रमयति। रे श्रीवत्स, पठनं केवलं कार्यार्थं न, समाजे आत्मस्थैर्यार्थं किञ्चिदपि पठनम् आवश्यकम्। महोदय, मम पितरौ अध्ययनं कृतौ, तथापि समाजे संयुक्तजीवनं कृतवन्तौ किल। सत्यं शरत्, सत्यं। वयं न पठितं, परन्तु मम पुत्राः पठित्वा समाजे श्रेष्ठव्यक्तिः भवितुम् इति तेषाम् उद्देशः। पश्यन्तु सर्वे, कार्यार्थं पाठ्यम् इति न,
परन्तु समाजे श्रेष्ठव्यक्ति भवितु युष्मान् बहु कष्टेन पाठयन्ति। अतः उक्तं खलु सुभाषितं विद्वान् सर्वत्र पूज्यन्ते इति विद्याधनं सर्वधनात् प्रधानम्। क्षम्यतां महोदय। ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲಿನ ದುರಾಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. The teacher just explained the students about mobile addiction. To sum up our drama conveyed the message about the importance of education for women, and the importance of women in our society. The message we wanted to convey from our drama is Vidyavilladavannu Pashu Samana. ಬಂದ್ರಿಪ್ಪ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿ ಹಾಂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಣ ಓಯ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೋಣ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಂ ಅನುಷಾ ಹಾಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಹಾಂ ನಮಿತಾ ಹಾಂ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಡು ಸುಮಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ನೀವು ಹಾಂ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ ರಾಜ ಹೀಗೆ ಇವ ಅನಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಅದಾನವ ಅನಿರುದ್ಧ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಸರ್ ಬರೋ ಮುಂದದ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪಿ ಬಿದ್ರೆ ನಿನಗೇನೋ ಸೈಡಿಂದ ಬರಾಕ ಏನಾಗಿತ್ತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಯಾಶೆ ಬಸ್ ಜರದ ಬಿದ್ದಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ರೋಡ್. ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತು ನಿನಗೆ ಸೈಡಿಂದ ಬರಾಕ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಬಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಏನು ಬಸ್ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಪ್ಪಿ ಆತೋಪ್ಪ ಕೊಂಡ್ರು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಪ್ರೋಬ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಕಲಿಯೋನ್ ಇವತ್ತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಗಾದೆ ಮಾತು ಕಲಿಯೋಣ ಆತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಮೊದ್ಲು ಕೈ ಕೇಸರ ಆತಾರೆ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬ್ಯಾಡ್ಗಪ್ಪಿರೋದಾರ. ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ ನಿರುದ್ಧ. ಸರ್ ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ. ಏಪ್ಪ ಏನು ನೀ ಏಯ್ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿರಿಲ್ಲ ಯಾರು? ಹಾಂ ಹೇಳುವ ಅನುಷಾ ಹೇಳು. ಸರ್ ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು. ಹೊಡೀರಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ರಿ ನನ್ನ ಮೊದ್ಲ ಏನಂತ ಕೇಳ್ರಿ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕ್ರಿ. ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮುಂದ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಸರ್. ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೇಳು ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ. ಹಾಂ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಂಗಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಹಾಂ ಕೊಂಡ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೇಳೋ ನಮ್ಮಿತ್ರ. ಸರ್ ನುನುಪು ಸರ್. ಏನು ನುನುಪ? ಬೆಟ್ಟ ಸರ್. ಬೆಟ್ಟ ಕುಂತ್ರ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ಸರ್. ಕೊಂಡ್ರ ಆತ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾರು ಬರ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಕೋರಿ. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೋರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಅನಿರುದ್ಧ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನ? ಎದಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ? ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಪೈ ಬರೀ. ಏಯ್ ಹೇಳ್ತೇನಿ ಏನ್ ಹೇಳ ನೋಡೋನು. ಏಯ್ ಸುಮಂತ ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀ. ಹೇಳ್ತೇನಿ ಅರ್ಧ ನೀ ಹೇಳ. ಸುಮ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀ. ಹೇಳ್ತೇನ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಮುಂದ. ಸರ್ ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ದ್ರಿ. ನಾ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೇನಂತ್ರಿಪ್ಪ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನ ಹೇಳ್ಪ. ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಐತ್ರಿ. ಏನ್ ಸಾಂಗ್? ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ದಟ್ಟರಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ. ಇವ್ರದೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಾನ್ಸ್? ಡಿಪಿದ ನಮ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಲಿದ ಡಿಪಿ ಫೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದಾರು ಟ್ರಾಫಿ. ಇವ್ರದೇನ್ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಬಿಡ್ರಿ ನಡಿ ನಾವು ಅವು ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ತಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಏ ಸಾಕು. अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया, ये हमारा नाम रोशन करेगी। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर। जय हिंद।
हेलो, मिसेस गुप्ता, हमारे कैप्टन अब नहीं रहे। मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा वे मैथों तेरा मन भरिया बदल गया सारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे तू बार जरा भी नहीं हुण तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन तेनू मिल जाना किसे दा सहारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा अरे कहाँ चले जाने मन? अरे पलट कर तो देख लो यार। अरे रुको, अरे तुम ऐसे नहीं मानोगी। प्लीज छोड़ दो। अरे छोड़ देंगे, डर क्यों रही हो? ना डरो मत यार। अच्छा चलो तुम एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक पी लेना बस। ना डरो मत यार। चलो ना मेरे साथ कॉफी पे प्लीज। अरे 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 जाने मत। अरे दुपट्टा तो ले जाओ। अरे अपनी इज्जत तो हमारे हाथ में दे गई तुम। अरे भाग गई यार। अरे इसको क्या हुआ? ये ऐसे क्यों आ रही है? ये तो खुशी होगी ना, इसका तो बाहर चक्कर भी चल रहा होगा। ये देखो इसकी बेटी भी आ गई नाचते हुए। ये लड़की ही पनौती है। इसके पैदा होने के बाद इसके पापा का देहांत हो गया। मैं क्या पनौती हूँ माँ? नहीं बेटा, क्यों क्या हुआ? तू तो मेरी प्यारी और होनहार बच्ची है। बाहर लोग बोल रहे थे माँ। अब मैं इन दुनिया वालों को दिखा दूंगी कि मेरी बेटी किसी से भी कम नहीं और मेरी बेटी ये हासिल करके ही रहेगी। रब दे पैरी पै जांदी तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जांदी जो तू ना मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब ओनू खो लैंदा जेड़ा होवे छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा
जल्दी खा लो बेटा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। बाय बेटा, मैं ऑफिस को जा रही हूँ। ये लीजिए सर, मेरा फाइल बन गया है। ये क्या है? ऐसे कोई फाइल बनाता है? ऐसा खेल रचा के भेजे मैनू तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे हाय को हुंदी ऐवे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा वे तू मैनू छड़ जाना गल्ला तेरिया तो लगदा वे मैथों तेरा मन परया। माँ, हमने जो सपना देखा था वो आज सच हो गया है। तूने मेरा और तुम्हारे पापा का नाम रोशन करके इस समाज को सिखा दिया कि एक फौजी की बेटी किसी से कम नहीं है। माँ को एक जोरदार तालियां दीजिए प्लीज। तो माँ, जो बात नहीं पता वो पूछ लेती हूँ, मन में कोई सवाल नहीं रखती। कि जो बात पता नहीं वो पूछ लेती हूँ, मन में कोई सवाल नहीं रखती। कि ये दुनिया कितनी भी अच्छी हो माँ, तेरे सिवा तेरे जैसा कोई ख्याल नहीं रखता। So, let's begin with a beautiful and melodious musical concert by Standard 9th. की सारी माँ की सिर्फ एक ही परिभाषा, सुखी रहे बच्चे हमारे, यही उसकी सबसे बड़ी आशा। जो सुकून है अपने माँ के आंचल में, जो सुकून है अपने माँ के आंचल में, वो न कभी पाओगे तुम किसी आलीशान से महल में। आजा
आए दिन हर कोई हमसे नाराज रहता है, पर एक माँ ही होती है जो कभी हमसे रूठ नहीं पाती। तू है कोई पहेली पहेली पहेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। तू है कोई पहेली पहेली पहेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। तारारी रारा रू रारा रू रारा रू, तारारी रारा रू रारा रू, तारारी रारा रू रारा रू रारा रू, तारारी रारा रू रारा रू। कभी लागे मेरी तू कभी तू पराई, जाऊं मैं ऐसी उलझ। कभी लागे मेरी तू कभी तू पराई, जाऊं मैं ऐसी उलझ। हो ऐसा कोई पल हो दुनिया ही दूर हो, चाहे दिल मेरा कि तू बैठे सिरहाने, मेरे बालों को सहलाने, जब तक ना नींद आए तू कहीं भी ना जाए। ना छोड़ना अकेली अकेली अकेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। तू है कोई पहेली पहेली पहेली, माँ बन जाना तू मेरी तू मेरी तू मेरी। तारारी रारा रू रारा रू रारा रू, तारारी रारा रू रारा रू, तारारी रारा रू रारा रू रारा रू, तारारी रारा रू रारा रू। कैसे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था उन्होंने, भागते भागते गिर जाती तो उठना सिखाया था उन्होंने। घर भर के सारे काम उठकर करती है वो आज भी, सबकी डांट सुनकर खामोश रहती है वो आज भी। मेरे चेहरे पे दुख आ जाए तो पहचान लेती है वो आज भी। मैं कितनी भी डांट लूँ सुना लूँ पर मुस्कुराती रहती है वो आज भी। थोड़ी सी भोली है, 2 रोटी मांगूं तो 4 रख देती है, 50 रुपए मांगूं तो 100 रख देती है। पर कोई ना, माँ तो माँ होती है। थोड़ी सी क्यूट है, थोड़ी सी करारी भी, थोड़ी सी कूल है, थोड़ी सी पुरानी भी। जैसे गर्मी में ठंडा सा शरबत, खट्टा मीठा सा, जैसे सर्दी में चाहत का कोई कंबल मोटा सा। मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है, मेरी प्यारी अम्मी जो है। दुनिया से लड़ झगड़ कर उसके गोदी में सर रख दूं तो समझो टेंशन ही खत्म हो गई यार। पापा के मार से कई बार बचाया है उन्होंने। कभी खुद को कुछ हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन हमें कभी कुछ होने नहीं देती। जब चोट कभी मेरी लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। माँ ओ माँ, जब चोट कभी मेरी लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी।
जितना दर्द सहकर हमें पैदा करना, रात रात पर जागकर हमें चैन से सुलाना। अगर है तुम्हारी जिंदगी में माँ आज भी, तो दो उन्हें वक्त, बैठ के बात कर लिया करो यार उनसे, उन्हें अच्छा लगेगा। उनकी इज्जत जितनी करो कम है, उन्हें प्यार जितना दो कम ही है। माँ कई नहीं होती, माँ एक ही होती है और एक ही बार मिलती है। Hats off to all the mothers. Play written by William Shakespeare, who is an English playwright, poet, actor and dramatist. The Merchant of Venice is a comedy that revolves around the life of Antonio, a merchant who takes a loan from moneylender Shylock to help his friend Bassanio court Portia. The series involves events which will be unveiled by his characters. Moving on to the first scene to meet Antonio, who is deeply in remorse. He is accompanied by his friends Celerino and Celanio. On the ocean, where the merchant ships are sailing. It's not my merchandise that is making me sad. Any little thing that might make me worry that something bad would happen to my ships would make me sad, without a doubt. Here comes your most noble relative, Bassanio, along with his friends, Cristanio and Lorenzo. Now, as your friends have arrived, we leave you alone. You care too much about worldly things. Those who care too much about worldly things end up losing them. Believe me, you really don't look yourself. My dear Bassanio, since you found Antonio, the two of us will leave you two alone. Well then, tell me who the lady is that you made an agreement to go on a secret trip with. Antonio, I owe the most to you, and in both money and in love. And you are my good friend. I can tell you all my plans and plots of telling all the depths. I owe the lady in Belmont who had inherited some riches and is both beautiful and virtuous. Her name is Portia. You know that all my money has been invested into my ships. I have neither the money nor any goods to sell in order to raise funds for you. Go ask around to find somewhere where you can borrow some money, and so will I. Bassanio goes to a greedy moneylender of Venice, Shylock. 3,000 ducats, huh? Yes, sir. For 3 months, Antonio will be the guarantor of the loan. Antonio will? Will you help me out? Will you agree to the loan? Antonio is a good man. Have you heard anyone say the wise about him? Oh, no, I haven't. I just meant to suggest a sufficient guarantor for your loan. May I speak with Antonio? This is Mr. Antonio. I hate him because he lends out money without charging interest, which forces me to lower my interest rates that I loan. I will satisfy my own grudge against him. Shylock, are you listening? Yes, I am. Let's sign an agreement. If you do not repay me the agreed upon amount of money, in the agreed upon day, in the agreed upon place, you will forfeit to me 1 pound of your fair flesh to be cut off from whatever part of your body I choose. Content in faith, I'll seal to such a bond and say there's much kindness in you. Antonio, you shall not fill to such a bond for me. Don't worry, I expect to make 5 times the amount of this contract within the next 2 months. Now, let's meet the female protagonist, Portia, a rich, beautiful and intelligent heiress of Belmont.
The will left by Portia's father instructs that she is not to be married until a suitor guesses correctly which of the 3 caskets contain her portrait, on the penalty that if the suitor guesses incorrectly, he shall not marry anyone. The caskets symbolize the dominant tendencies prevalent in human nature. The first prince is the Prince of Morocco from Africa. One of them has my picture inside, Prince. If you choose that one, I'm yours. Oh hell, what is this? A picture of a skull? Hey man, it's useless. Next is the Prince of Aragon, who is in Belmont to try and win Portia's hand in marriage. Hurry, hurry please. The Prince of Aragon has sworn his oath and now comes to make a selection. I'm prepared to take the risk. I know the rules. What's here? The portrait of an idiot holding something? How different this picture is from one of Portia. Bassanio is now in Belmont to try out his luck. Oh, what do I find here? The picture of beautiful Portia. The reason for the lead casket selection of Bassanio was his wisdom rather than his rich external appearance. My lord and lady, it is now the time for those of us who have stood by here and saw our wishes come true to cry out, good joy, my lord and lady. Promise me that you'll not lose the ring. I am a man of my words. Messala then explains to Portia that Bassanio has no wealth of his own. Shylock is now determined to have his pound of flesh from Antonio and seeks the Duke's help. Portia believes in the importance of helping Bassanio save Antonio and decides that she and Nerissa will go to Venice to help their beloveds. Moving to the trial scene. How can you hope for mercy if you don't show it yourself? I have bought the pound of flesh that I demanded from him. It is mine and I will have it. If you deny me, your law means nothing and there is no power in legal agreement in Venice. I have the power to dismiss this court unless Valerio, a learned doctor of law, comes here today. I have sent for him to decide upon this case. Where is this man? He's waiting nearby to hear whether you will let him into the court. All my heart. The letter says that Bellario is too sick to come and that he is sending a young doctor of Rome called Balthazar. Portia then arrives disguised as Balthazar. Welcome. Take your place here. Are you familiar with the different sides of the case? Yes, my lord. Is your name Shylock? Shylock is my name. Your artist Mercy, aren't you? Yes, as Shylock says. Do you confess that you have broken the agreement? Yes, I do. Then Shylock must be merciful. Why must I? Tell me, why? Mercy is not something that one is forced to be practiced. It falls easily like gentle rain from sky. It's a doubly blessing. It blesses both the person showing mercy and the person receiving mercy. We pray to God for mercy, and that prayer should teach us to show mercy to others. My deeds are my responsibilities. I wonder the penalty which he must forfeit because of the loan. Can he not pay the money back? I have money in the court, even twice. With all my heart, I ask the court to issue its judgment. Have some surgeon and call nearby Shylock
to stop Antonio's home so that he doesn't bleed to death. Is this spelled in the contract? I can't find it in the contract. It is not there in the contract. You merchant, do you have anything to say? Give me a hand, Bassanio. Farewell. Don't grieve because I have fallen into this misfortune on your behalf. Speak well of me to your honorable wife. Antonio, I am married to my wife who is as dear to me as my life. I will sacrifice everything to rescue. Your wife wouldn't be too happy to hear that if she were around to hear you make this offer. And you cut this flesh off his breast. Such a wise does the right sentence come. Get ready. Hold on a second. There's something else. This agreement doesn't give you any drop of blood. The words are a pound of flesh. So take what is yours. Take your pound of flesh. But if in cutting it off, you shed one drop of blood, your lands and goods will be confiscated by the state of Venice by the city's laws. Well then, I hope the devil gets him for this. I won't stay here any longer to argue. Wait! The law has another requirement of you. It is enacted by the state of Venice that if a foreigner have directly or indirectly attempted to kill a citizen, the citizen against whom he plotted will get half of his goods. The other half will be confiscated by the state. On your knees then and beg for the Duke's mercy. I pardon your life even before you asked. Half of your wealth belongs to Antonio, the other half goes to the state, and this may be reduced to a simple sign if you show humility. Yes, the money due to the state can be reduced, not the money due to Antonio. If it pleases my lord, the Duke and the rest of the court, I am content to give up half of his goods owed to me as long as he gives me other half of his wealth, so that I can invest it and upon his death give it to the gentleman who loves his daughter the most. He will do this or else I will take back the pardon that is pronounced here. Antonio, thank this gentleman for I think you owe him a lot. Sir, take some remembrance as a gift, if not payment. As a token of your gratitude, I'll take your ring. I won't take anything else. Sir, this ring was given to me by my wife, and when she put it on my hand, she made me swear that I have to sell it, lose it, or give it away. That's what many men say as an excuse not to give gifts away. Portia then welcomes Bassanio and Antonio. Bassanio explains to Portia about why he gave his ring away. Portia is not satisfied. She hands him another ring. By heaven, this is the same ring I gave to the lawyer. Here is a letter. Read it when you can. In this letter, you will find that Portia was the lawyer and Nerissa was the clerk. Antonio, you're welcome here, and I have even better news for you in store. Open this letter soon and you will read that the 3 of your ships have suddenly come into harbor full of riches. The lesson that we learn from the Merchant of Venice is one should always help others and show mercy. Hope you all enjoyed the play. Thank you. Nidhi as narrator. Sachet as Antonio. Praneeth as Solanio. Omkar as Salarnio. Mark as Lorenzo. Mandar as Prince of Morocco. Janak as Bassanio. Krishna as God. Puneet as Masala. Ishan as Cristiano. Vaibhav as God. Shraddha as Portia. Saisha as Nerissa. Kanishka as casket holder. Sahana as casket holder. Sumedha as casket holder. Atharva as magistrate. Saksham as Prince of Aragon. Aditya as Shylock.